गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया कतर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अमीर ऑफ स्टेट ऑफ कतार जो है अभी रिसेंटली स्टेट विजिट पर आए थे इंडिया में। ये उनकी सेकंड विजिट थी इंडिया को। इससे पहले वो मार्च 2015 में भी इंडिया में आए थे। तो इंडिया और कतार का जो रिलेशन है वो हिस्टोरिक बॉन्ड्स, हाई लेवल एंगेजमेंट और वैल्यूड इंडियन डायस्पोरा पर बेस्ड है। तो इंडिया और कतार की जो डिफेंस टाइज हैं उसमें ट्रेनिंग स्लॉट्स आते हैं, नेवल विजिट्स होते हैं, डिमडेक्स होता है। डिमडेक्स में बेसिकली एक मरीन एग्जीबिशन है जो कतार में होती है, और डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जो कि 2018 में साइन किया गया था, एक्सटेंड किया गया था जिसको। इंडिया का बायलैटरल ट्रेड जो है वो $18.76 बिलियन है कतार के साथ। इंडिया अमंग द टॉप 3 लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं कतार के लिए, चाइना और जापान के बाद। कतार जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया को एलएनजी का, और लार्जेस्ट जो है सप्लायर है एलपीजी का भी। लगभग 8,35,000 इंडियन नेशनल्स रिजाइड करते हैं कतार में। कतार ने लेबर रिफॉर्म्स भी किए हैं, जैसे कि अपना कफाला सिस्टम अबॉलिश किया है, जॉब चेंजेस को ईजी किया है, पेनलाइज किया है अगर कोई पासपोर्ट को कॉन्फिस्केट करता है, मिनिमम वेज को भी इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो कतार एक की पार्टनर है इंडिया का ड्यू टू इट्स स्ट्रेटजिक लोकेशन, ट्रेड पोटेंशियल, एनर्जी रिसोर्सेज और स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा। दोनों कंट्रीज़ वर्क कर रही हैं स्ट्रेंथन करने के लिए इकोनॉमिक और सिक्योरिटी टाइज को। दोनों लीडर्स ने अनाउंस किया एलिवेशन ऑफ इंडिया कतार टाइज टू स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप के साथ कतार ने यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान और कुवैत को इंडिया की स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट्स के साथ ज्वाइन कर लिया है। तो दोनों कंट्रीज़ ने टारगेट रखा है कि डबल किया जाएगा बायलैटरल ट्रेड $28 बिलियन तक 2030 में। और कतार का सोवरन वेल्थ फंड भी जो है वो $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। इंडिया और कतार जो है वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी एक्सप्लोर करेंगे। कतार की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो एक ऑफिस खोलेगी इंडिया में। इंडिया का यूपीआई चलेगा वहाँ पर ऑफ कोर्स। कतार नेशनल बैंक जो इंडिया की गिफ्ट सिटी में वहाँ से ऑपरेट करेगा। 2 एग्रीमेंट्स और 5 एमओयूज जो है वो इकोनॉमिक कॉपरेशन पर भी साइन हुए हैं। और कतार जो कि एक मेजर एलएनजी सप्लायर है इंडिया को, उसने अपनी कमिटमेंट दिखाते हुए कहा है कि वो 7.5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम जो है एलएनजी इंडिया को देगा 20 ईयर्स के लिए स्टार्टिंग 2028। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि जो बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर है उसे 5 लाख से बढ़ा दिया जाए। तो ये डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करता है, उनकी मनी अगर वो लूज़ कर देते हैं अगर इन केस ऑफ बैंक फेलियर। डिपॉजिटर्स जो है अपने इंश्योर्ड फंड्स को इमिडिएटली एक्सेस कर पाते हैं एक्चुअली। पैनिक बचाता है ये फाइनेंशियल सिस्टम में। डिपॉजिटर्स को शील्ड करता है लिक्विडेशन रिस्क से। तो इंडिया में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो है वो 5 लाख तक के डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस देता है। कमर्शियल बैंक्स में हो, चाहे फॉरेन बैंक्स में हो, लोकल एरिया बैंक्स में हो, रीजनल रूरल बैंक्स में हो, कोऑपरेटिव बैंक्स में हो, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, करंट डिपॉजिट हो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि इस अमाउंट को बढ़ाया जाए। सेक्शन 18A जो है इस एक्ट का, DICGC एक्ट 1961, ये इंश्योर करता है कि डिपॉजिटर्स जो उनको इंटरिम पेमेंट मिले इन केस आरबीआई जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है अगर बैंक के ऊपर। तो डिपॉजिटर्स जो है वो अपना 5 लाख तक का जो है इंश्योर्ड डिपॉजिट्स विद इन 90 डेज ऑफ सच रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। 5 लाख तक की मैक्सिमम कवरेज होती है। तो मतलब अगर आपके अकाउंट में 4,99,000 है तो आपके फुल कवरेज मिल जाएगी, आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। अगर 10,000 रुपये ऊपर है तो आपको 5 लाख तक की जो है कवरेज मिलेगी। बैंक अगर लिक्विडेट हो जाता है तो DICGC जो है वो इंश्योर्ड अमाउंट पे कर देती है जो डिपॉजिटर को। तो 1962 में सबसे पहली बार ये 1,500 रुपये पर डिपॉजिटर जो है कवरेज दी गई थी। इसको बढ़ाकर फरवरी 2020 में 5 लाख रुपये कर दिया गया है, और इसको भी अब दोबारा से बढ़ाने की बात की जा रही है। तो अगर हम पिछले साल तक का आंकड़ा देखें, 97.8% जितने भी टोटल अकाउंट्स हैं वो फुली इंश्योर्ड थे, जो कि इंटरनेशनल बेंचमार्क का जो 80% है उससे कई ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया फाइनल स्टेजेस में है अपनी पहली बायनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पब्लिश करने में एज पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट्स अंडर द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। तो ये रिपोर्ट जो है वो UNFCCC को जो है वो सबमिट की जाएगी।
तो ये BTR एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो डिटेल्स देता है इंडिया की ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन्वेंट्री के बारे में, इंडिया क्या एफर्ट्स ले रहा है एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में और शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है क्लाइमेट एक्शन पर इंडिया के पास क्या है। तो इंडिया ने पहले भी जो है नेशनल कम्युनिकेशंस और बायनियल अपडेट रिपोर्ट सबमिट की हैं, लेकिन BTR एक यूनिक कंसेप्ट है क्योंकि टेक्निकल रिव्यू किया जाएगा इसको UNFCCC के एक्रेडिटेड एक्सपर्ट्स द्वारा। तो पेरिस एग्रीमेंट मैंडेट करता है कि कंट्रीज़ अपनी क्लाइमेट एक्शन एफर्ट्स जो हैं BTR के थ्रू जो है रिपोर्ट करें। तो BTR जो है वो एक्सटर्नल टेक्निकल स्क्रूटनी अंडरगो करती हैं जिससे कि एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी हो सके। इंडिया की प्रीवियस जो रिपोर्ट थी उसमें हमें देखने को मिला था कि 7.93% ड्रॉप इन एमिशंस हुए थे ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन्स। तो जो लास्ट BUR रिपोर्ट थी इंडिया की उसमें टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 2959 मिलियन टन थे। एनर्जी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जो आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। इंडिया का फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है उसकी वजह से 522 मिलियन टन्स ऑफ CO2 जो है वो सिक्वेस्टर हुई थी, जिसकी वजह से 22% जो है मतलब टोटल कार्बन एमिशंस रिड्यूस हुए थे। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अर्बन एरियाज़ में वो अनचेंज रहा है आपके अक्टूबर से दिसंबर तक के क्वार्टर में। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है अमंग पर्सनस ऑफ एज 15 ईयर्स अर्बन एरियाज़ में वो इंक्रीज़ हुआ है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी अर्बन एरिया में इंक्रीज़ हुआ है। ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अर्बन एरियाज़ में वो डिक्रीज़ हुआ है। और जॉबलेस रेट जो है यूथ का 15 to 29 एज वो भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो कंडक्ट करता है ताकि एस्टिमेट किया जा सके कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स को। तो ऑफकोर्स जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स जो हैं उन्होंने इनाग्रेट किया है कि इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल ब्रह्मपुत्रा रिवर पर असम के जोगी घोपा में। तो ये टर्मिनल जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगा कनेक्टिविटी इन द रीजन और बॉस्टर करेगा हमारे ट्राइलेटरल ट्रेड विद भूटान एंड बांग्लादेश। तो इसमें पोटेंशियल है कि ये बूस्ट कर सकता है ट्रेड को बाय रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर एंड ऑफर करेगा एक इको फ्रेंडली और अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाया ब्रह्मपुत्र रिवर। बाय 2027 ये टर्मिनल जो है वो हैंडल करेगा कार्गो ऑफ 1 मिलियन टन्स पर एनम। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टेचुटरी बॉडी है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 के अंडर प्रेजेंटली इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं। तो ये डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करती है इनलैंड वाटरवेज की, इंडिया के में नेशनल वाटरवेज बनाती है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रखती है। नोएडा में हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंडर ये आती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो अपना डेकेड कंप्लीट कर चुकी है क्योंकि इसे 2015 में लॉन्च किया गया था ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स को असिस्ट किया जा सके सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो सारे फार्मर्स को देने में। इन्फॉर्मेशन देती है फार्मर्स को न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ देयर सॉइल के बारे में। तो 12 पैरामीटर्स जो है उसका स्टेटस ये सॉइल के में जो है वो देती है। सॉइल सैंपल्स जो है वो साल में 2 बार लिए जाते हैं। फार्मर को एक बार सॉइल कार्ड इशू कर दिया जाता है हर 3 साल बाद। विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब्स भी बनाई गई हैं, एक मोबाइल ऐप भी बनाई गई है। ठीक है, तो फार्मर्स इसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी क्रॉप्स उन्हें लगानी चाहिए और कौन सी जो है वो इस साल स्किप करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशिया ने कहा है कि ऑयल फ्लोज जो कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम से हो रहे थे, एक मेजर राउट है जो कजाकिस्तान के थ्रू ग्लोबल मार्केट में ऑयल सप्लाईज देने का, वो रिड्यूस हुए हैं 30 से 40% बिकॉज यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है उस एक पंपिंग स्टेशन पर। तो कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम $2.6 बिलियन का प्रोजेक्ट है। 935 माइल्स की क्रूड ऑयल पाइपलाइन इसमें बनाई गई है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1999 में शुरू हुई थी, कमीशन हुआ है 2001 में। ऑयल कैरी करता है कैस्पियन सी रीजन से इंटरनेशनल मार्केट्स में।
तो इसमें जो है रशियन और कज़ाक गवर्नमेंट्स दोनों इन्वॉल्व हैं, और कज़ाकिस्तान के टोटल जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उसका 2/3 जो है वो इसी पाइपलाइन से जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India-Qatar strategic partnership. This topic is important for international relations. So the Amir of State of Qatar has paid a state visit to India recently. This was his second visit to India. He had earlier visited India on a state visit in March 2015. India-Qatar ties thrive on historic bonds, high-level engagement, and a valued Indian diaspora. We both have defense ties also, which include training slots, naval visits, DIMDEX participation. DIMDEX is basically a marine security exhibition which is conducted in Qatar. And even a defense cooperation agreement exists, which was extended in 2018 by the two sides. India's bilateral trade with Qatar was about $18.76 billion in 2022-2023 period. India is among the top three largest export destinations for Qatar after China and Japan. Qatar is the largest supplier of LNG to India and also the LPG to India. There are over 8,35,000 Indian nationals who reside in Qatar. Qatar has also introduced labor reforms like abolishing of the kafala system, easing the job changes, penalizing passport confiscation, introducing a minimum wage, and strengthening worker protections. Okay. So Qatar is a key partner for India due to its strategic location, trade potential, energy resources, and a strong Indian diaspora. The two countries are working on strengthening economic and security ties. After the elevation to the strategic partnership level, Qatar has joined UAE, Saudi Arabia, Oman, and Kuwait in India's strategic engagement with the GCC. Both countries have set a target to double bilateral trade from $14 billion to $28 billion by 2030. Qatar's sovereign wealth fund committed $10 billion in India. India and Qatar also discussed a potential FTA to further boost their economic cooperation. Decision of Qatar Investment Authority to open an office in India was also made. Operationalization of India's UPI in Qatar was also made. Expansion of Qatar National Bank presence in India by setting up an office in Gift City was also decided. Both nations have also signed 2 agreements and 5 MOUs covering economic cooperation. Qatar has also committed its energy cooperation with India by ensuring the supply of 7.5 million metric tons of LNG per annum to India for 20 years starting 2028. Okay. So the next topic is deposit insurance cover. This topic is important for economy section. The government is considering raising bank deposit insurance beyond the current 5 lakh rupees. So bank deposit insurance protects depositors from losing money if a bank fails. So it's a kind of financial safety net for the depositors. Depositors can access insured funds immediately. This prevents panic in the financial system, and it also shields depositors from liquidation risks. So in India, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation insures deposits up to 5 lakh rupees. So deposits made in the commercial banks, foreign banks, local area banks, regional rural banks, and even cooperative banks, excluding of course the primary cooperative societies, are insured. Savings, fixed, current, and recurring deposits all are insured. So government wants to increase the deposit insurance amount, which was recently in February 2020 increased to 5 lakh rupees. So Section 18A of the DICGC Act ensures that depositors receive interim payments in case of RBI imposing restrictions on a bank. Depositors can access their insured deposits up to 5 lakh rupees within 90 days of such restrictions. Maximum coverage is 5 lakh rupees, which means that if you have a 4,99,000 rupees in your bank account, the entire amount is covered. If you have 5,10,000 rupees in your bank account, then 5 lakh rupees is covered. 10,000 rupees will not be covered. So if a bank is liquidated, DICGC pays the entire insured amount to the depositor within 2 months of receiving the claim list. So initially, this deposit insurance ceiling was introduced in 1962 with a coverage of just 1,500 rupees per depositor at that time. Now, it has been enhanced 6 times over the years, with recent one in 2020 February, and the amount has been raised to 5 lakh rupees. And there is also talk that this amount would be further increased in the future. So as of 2024,
97.8% of total bank accounts were fully insured, which exceeds the international benchmark of 80%. Okay. So the next topic is greenhouse gas inventory. This topic is important for your environment section. So India is in the final stages of preparing its first ever biennial transparency report as part of its commitments under the 2015 Paris Agreement. So Ministry of Environment will submit this report to UNFCCC. This BTR is an official document which provides details on India's greenhouse gas emissions inventory, efforts to improve energy efficiency and shift to renewable energy sources, availability of resources for climate action. So while India has previously submitted national communications and biennial update reports, BTR is a unique concept because it undergoes technical review by UNFCCC accredited experts. So Paris Agreement mandates countries to report on their climate action efforts, and BTR is a step forward fulfilling these commitments. Unlike the BURs, BTRs undergo external technical scrutiny, which ensures their accuracy and reliability. India's previous BUR, which was submitted in 2024, which contained data up to 2020, showed a 7.93% drop in emissions due to COVID 19 lockdowns. So, as per the 2020 data, total greenhouse gas emissions stood at 2959 million tons of CO2 equivalent. Energy sector was the primary contributor, and India's forest and tree cover helped sequestering of 522 millions of CO2, which reduced total carbon emissions by 22%. Okay. So the next topic is periodic labor force survey. This topic is important for your economy section and also your social issues. So unemployment rate in urban areas has remained unchanged as per the in the third quarter of financial year 2025. Labor force participation rate among persons of age 15 years and above has increased. Worker population ratio in urban areas has also increased. Unemployment rate in urban areas has decreased. The jobless rate for the youth 15 to 29 years of group has increased. So this periodic labor force survey is conducted by National Sample Survey Office, which falls under the Ministry of Statistics and Program Implementation, and it estimates the key employment and unemployment indicators in the country, okay, both in rural and urban areas annually. So the next topic is inland water transport terminal. This topic is important for your economy section. So recently, Union Minister of Ports has inaugurated an inland waterways terminal on Brahmaputra in Assam's Jogi Gopa. So inland, this terminal is going to transform the connectivity and boost our trilateral trade with Bhutan and Bangladesh. It has the potential to boost trade by reducing transportation expenditure and offering an eco-friendly and alternative mode of transport via Brahmaputra River. By 2027, this terminal is expected to handle cargo of 1 million tons per annum. So, what is Inland Waterways Authority of India? It is a statutory body which was established under the Inland Waterways Authority of India Act of 1985. It presently has 5 regional offices. It undertakes projects for development and maintenance of inland waterways and infrastructure on national waterways. Okay, through the grants received from Ministry of Ports, which is the nodal ministry of this body. Its headquarters is located in Noida. So the next topic is soil health card scheme. This topic is important for your environment section. Recently, soil health card scheme has completed its decade. So it was launched in 2015 to assist state governments to issue soil health cards to all farmers. So it provides information to farmers on nutrient status of their soil. It contains status of the soil with respect to 12 parameters. Soil samples are taken generally 2 times in a year. A farmer will get the soil card once in every 3 years. Village level soil testing labs can be set up to provide test results by individual entrepreneurs, and even a mobile app has been built with additional features. So, soil health cards help the farmers to decide well which crops they should cultivate and which ones they should skip. Okay. So the next topic is Caspian Pipeline Consortium. This topic is important for your international relations. So Russia has said that oil flows through the Caspian Pipeline Consortium, which is a major route for supplying Kazakhstan and exporting to the global market, were reduced by 30 to 40% recently after a Ukrainian drone attack on a pumping station. So Caspian Pipeline Consortium
is a $2.6 billion project consisting of 90 to 35 miles crude oil pipeline, which runs from Tengiz oil field in Kazakhstan to Russia's Black Sea port of Novorossiysk. So the construction began in 1999 and it was commissioned in 2001. So it carries oil from Caspian Sea region to international markets. So CPC includes the Russian and Kazakh governments as well as some Western energy companies. So this pipeline accounts for two-thirds of Kazakhstan's oil exports. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.